Uh, yes, so I'll do one thing, guys. I'm going to take a lecture on data loaders. When I start with the data management, I'll take a lecture on the data loader. So that time, just remind me to take these two questions. Okay. Meanwhile, you have time, you can try. You can Google and try. If somebody, succeeded, it's really a good thing. Otherwise, I'm going to tell, don't worry, I'm going to tell, but I'm going to take a lecture of data loaders probably in the next Sunday. I mean, not this. In the next Sunday, I'm going to take the lecture. So on the data loader lecture, I'm going to explain with these two. Amara, please mute yourself. Yeah. So let me start with the new topic, and that is the analytics. Analytics in the Salesforce mainly consists of two features, that is reports and the dashboards. So we are going to discuss two things over here. What is a report and what exactly is the dashboard? So reports is what? First of all, see, reports inside the Salesforce, there could be some more definitions, but inside the Salesforce, report is what? Report is a collection of records, and they are represented on the tabular form. These records could be either collected from a single object, or it could be collected from more than one object. So what exactly is report now? So report is merely a collection of the records. That is something we collect it either from one object, or we can collect it from more than one objects also. So they are represented on the tabular format, and you are going to see that. So report is something which is a collection of record, in short. Now, everywhere we have the same thing. I'm going to tell you that Salesforce provide you two different types of reports. What are those things? What are those different two types? These are again standard and the custom. The same thing. We so many times, like we have discussed this. Like there are two different types of applications. Salesforce provide you two different types of applications, like standard, custom application. Then object also, we have seen that there are two types of objects, the standard object, custom object. Everywhere inside the fields also, standard fields and the custom fields, like this. So everywhere, whenever we discuss this concept, we came to know that basically Salesforce provide you few features in advance, which called to be the standard feature. And then Salesforce even provide you some facilities that you can build up your own functionalities. That is what we called it to be the custom. So Salesforce, yes, Salesforce give you inside the reports, inside the analytics also, you have few standard reports, few ready-made reports that has been given to you from the Salesforce. And then we will going to learn how to create our own customized reports. That is something called as custom reports. Now see, one thing which is common between this reports and the templates, email templates, we learned email templates also. And if you remember, I told you one thing, every email template must be reside inside a folder. Every email template must reside in a folder. And so, whatever the, let me go to that. So whatever the custom email template that what we created, we actually created first a folder, we created a folder, align email template folder, this folder. And these all were the email templates that we constructed. They are all being stored inside what folder. So when we were discussing this topic, if you remember, I told you one thing, that every email template must be stored inside a folder. There are there are two types of the folder. Standard folder, you unfiled public classic email template, my personal email template. These are the standard folders. And then custom folders also, you have this access. And I mean, you can create your own custom folder. So every email template must be present inside what? Inside a folder. And whenever it comes to the give the access, whenever we talk about giving the access on this particular template, we actually provide the access on the folder. This access could be, this level of the access could be read only and read write, right? So whenever we give any access to the template, we actually give the access to the folder. And whatever the templates that are inside the folder will have the same access. If probably on this access, if probably on this folder, align email template folder, we have given a read write access. That means every email template, whatever we stored inside this, is going to have a read write access, right? So this was the concept. Now this concept is here also. Okay, every report must present inside
a folder. Every report must present inside a folder. Again, there are two types of folders: standard folder, custom folder. Like here we discussed that unfiled, public classic email template, and my personal email template. These two were the standard folders. And we created our own custom folder. Now here also we are going to learn the same concept. What are the two things common over there? What are the two things that are common between reports and a template? First thing, likewise to a template, likewise to an email template, every report must also be, present inside a folder. The template must be present a folder. Report must also be present inside what? We must store a report inside a folder. This is the first thing. The second thing, what is common is that if you want to give any access on the report, you should give access on the what? Folder. Giving the access on the reports meant giving the access on the folder. Whatever the access we decided on the folder is going to be live. It's going to be live on the what? It's going to be live on the reports. This is what. So again, there are two types of the folders: standard folders and the custom folders. So let me show you that first. So if we are working on the reports and the dashboard, I first need to have one tab over here, and that is the reports tab. Either you can have a report, either you can have a dashboard. So presently, I see I don't have a report tab. So let me first bring the report tab over here. Let me first bring the report tab over here. Let me slightly up, just below the opportunity. I mean, all standard objects in one place and all custom objects in one place. That is what that is what my planning is to do. And let me save this. So now I have this reports folder over here, reports tab over here. So if I open this tab, reports, I will be landed on 00 and that is what the reports home page. Oblique O means home page, right? So now here you can see all these are what? These are the standard folders. We not created, so far we have not created any folder. I'll show you how to create the folder. I mean, we created this folder also. I mean, when we were learning this email template, I told you how to create your own folder. Actually, there was a link called as create a new folder. With this, you have created a line email template folder. Here we don't have any link as such. Here we don't have any link as such. But then I'll tell you how to create your own custom folder. First of all, learn this. All these are what? These all are the standard folders. Unfiled public reports, my personal custom reports, my personal dashboards, accounts in the contact records, opportunity, sales, lead, whatever. These are what? These are the folders. If you open any folder, you see there are few different sample reports are there. Account history report, account owner report, account with the last activity greater than equals to 30. If I open this opportunity report folder, this is a folder. I can see there are few reports inside here also. These many 14 reports are there. If I open the sales report folder, I can see that there are few reports here also. If I open this folder, whose name is lead report, I can see there are altogether 6 different reports. Now, what are these reports? These are what? Standard reports. These are the standard folders. And inside the standard folder, I can see whatever we have just come up to this tab and we have not created any of the reports. So obviously, all the reports, whatever we are seeing over here, every report is what? These all are the standard reports. These all are some sort of sample report that is being given to you from the Salesforce so that you can understand how the reports looks like and how these reports are executed. These are what? These are the sample data for you. So yes, this was a discussion that, there are few standard reports. We can develop our own custom report, and that is what we are going to work. But the Salesforce even provide you some of the sample report. We call it to be the standard reports. Okay. Now again, there are two types of the folder: standard folders and the custom folders. Now, whatever the folder you have seen right now, all these are the standard folders. These all are the standard folders. Now let me show you how to create the custom folder. How to create the custom folder, and please write it down because I have not written the navigation over here. See, I have not written the navigation how you can create the custom folder, right? So how you can create a custom folder is not written. So please watch it very carefully and then please write it down. Although it's being recorded, so that is not an issue. When you come back to see this video, and again, you can see how to create a custom folder. You see, there is a small icon over here, a very small icon.
So with this icon, if I click this, if I click this, it's going to open a pick list menu where I got two options. New report folder. The second one is new dashboard folder. What I want presently, I want to work on the reports. I mean, we are going to start with the reports. Then after completing the report, we are going to move on with the dashboards. So that time I'm also going to create one folder just for storing my dashboards. Presently, what I'm going to construct, presently what I'm going to make is what report. And so I'm creating a new report folder, right? So you need to click on this. This is a small icon. There's no link like here. Here is a link, create a new folder. It clearly indicates that with this link you can create a folder like this, align email template folder. This one is a custom template folder what we created. Here we can see there's no link as such, right? New report, new dashboard. But yes, there is no actually there's no link for creating a folder. Actually there's a small icon. You need to click this. Once you click this, you got the option to create a new report folder. Just click on this. So just click on this, you will have this option. So report folder label. Let me give any name for here. Let me give the name like align HR reports. I can give any name. It's user defined thing. So you can give any name. Just press the tab from your keyboard and this folder unique name. This API name is going to be created by automatically. And probably you are used to of this concept, right? Let me save it. So see, I created a folder align HR reports over here. Okay. Now, if you bring your cursor, on this folder everywhere, everywhere, apart from these three things, you unfiled, my personal and my personal dashboard. If you bring your cursor over here, you see there is an icon on the right side. You see there's an icon on the right side. These all are what? These all are your standard folder. We now just created this custom folder align HR report. So let me click on this. These are the options: share, edit, and delete. What I can do with this? Folder, I can share this folder. We are going to, I'm going to explain to whom we can share and what will be the label of the access, what we can provide during the sharing, right? Okay, before that, let me show you all these options. So with this folder, what I can do, I can share it, I can edit it, I can even delete it. Why? Because this one is a custom folder. I just created this folder. Okay, let me come to this account and the contact report. This one is a standard folder. Here also the same icon is there. Let me click on this. I have only one option, share. What are the options that are not over here? You cannot edit it, you cannot delete, because this is a standard folder. If I go to the opportunity, if I click on the opportunity, again the same thing is there. I cannot edit or delete it because this is again a standard folder. For every standard folder, you only have one option, and that is sharing. You cannot delete, you cannot edit. What you can do is that you can only decide to whom you want to share this reports and what will be the level of the access the person can have. This is the only thing what you can do with the standard reports that are present inside the standard folder. And they ask you this in the interview. Please write it down. Please write it down. This is an interview question. What we can achieve, what we can achieve with the standard reports that are present inside the standard folder. What we can do, what activities we can perform. So many ways I could ask this question. So many ways this question could be asked. What are the activities that we can perform on the all standard reports that are present inside the standard folder? Any standard folder. These are what? These are the standard reports. You open the lead reports. What are these reports? These are the standard reports. What is this folder? This is the standard folder. What are the activities that you can perform? You can only perform sharing. You can only perform the sharing of these reports. You can only decide to whom we can share and up to what level we can provide the access, level of the access. So this is the only thing what we can do with the standard reports present inside the standard folders. But what we can do with the custom folders?
or rather the custom reports that are present inside the, abhi to kaisa hai, I have not created any report, yes, but we are about to create this, this reports, these custom reports we are about to create, and whatever the custom report I'm going to create, I'm going to store it inside this folder, align HR reports. What are the activities that I could achieve over here? I could share it, I could edit this, I could even delete this. So this edit and delete option is not there inside the standard functionalities. It's only there inside the custom functionalities. So please write it down because I know you are going to forget it. जहां आप इतनी सारी बातें भूलते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बड़ी बातें भूले हैं आप लोग, तो ये तो ऑब्वियसली आप भूलने वाले हैं. सो प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन, डोंट माइंड, प्लीज राइट इट डाउन. ठीक है. सो ओनली वी कैन एडिट एंड डिलीट ओनली दी custom folders, I mean rather the custom reports, but we cannot make any changes as such in the any of the standard folder and any of the standard reports, right? चलिए. So what about the sharing? अब sharing पर आते हैं तो sharing से पहले कुछ चीजें, कुछ theory है, इसकी छोटी सी theory है. We can share the reports which are present inside the folder. See, sharing a report means sharing with the folder. You cannot individually perform any activity on the report. आप किसी individual report को share नहीं करते हो, कभी भी नहीं करते हो. You actually share the folder. है ना. मैं एक फोल्डर में 10 रिपोर्ट रखा है मैंने, देखो सुनो समझो, मतलब एक फोल्डर है जिसमें मैंने 10 रिपोर्ट्स रखे, मैं ये फोल्डर को शेयर करूंगा तो वो सारी की सारी 10 रिपोर्ट शेयर हो जाएंगी. हम ऐसे इंडिविजुअली रिपोर्ट्स को शेयर नहीं करते हैं. ये शेयरिंग वगैरह जो भी है या लेवल ऑफ एक्सेस जो भी है, ये सारी बातें किस पर लागू होती हैं? ये सारी चीजें लागू होती हैं आपके फोल्डर पे, ना कि रिपोर्ट्स पे. आप फोल्डर्स के ऊपर में परमिशंस प्रोवाइड करते हो. whatever the permission you are providing it on the folder, and it is going to be, it is going to be applied, it's going to be applied on every report whatever is present inside this folder. तो मैं जितनी भी यहाँ पे शेयरिंग करूंगा और मैं जितना भी जो कुछ भी मैं डिसाइड करूंगा, whatever the permissions I'll going to share with this, I mean whatever the settings I'll decide over here, that is going to be applicable on all these 11 reports, whatever the report that are present over. तो अब ये कुछ चीजें जो हमको समझना है कि what exactly is the sharing and what is the level of access, what is the types of permission that you can provide. So first of all, you can share a report, you can share a folder. Sharing a report, sharing a folder, don't get confused, it's one and same thing. It is one and same thing, because if I want to share a report, the report must be present on folder. The folder is something which I'm going to share. Okay, let's come to back. I can share a report, I can share a folder to a user. I can share it to roles and the internal, external subordinates. That means roles and the subordinates and the public group. Now you ask me, sir, what is this all? I don't know what this all. I have never heard, because you have not come up to the topic security. Security is the most important topic in your entire admin training, and you are going to learn it as the last topic. As the last topic of your admin training, you are going to learn security. And all these terms we are going to discuss over there. What does it mean by the user? How to create a user? How to create the users inside my Salesforce organization? What does roles means? What does it mean by the roles and the subordinate? And what does it mean by the public group? These all terms are going to be cleared later on. ठीक है, अभी मैं user थोड़ा सा बता दूंगा आपको, because थोड़ा बहुत समझ सकते हो आप मेरे हिसाब से. Then what are the levels of the permission? There are three different types of the permission what we can provide on a report. And this one is an interview question. Probably I have written it. Let me check it out. What are the different permission sets that can be given to any user on the report? What are the different types of permission sets that can be given to any user? What are the different permissions that we can apply on any report? There are 3 different kinds of permissions that can be applied on any report or any report folder. What are those permissions? Beaver, editor, manager. These are the 3 different permissions that we can apply on any report. We can apply 3 different types of permissions on any report. Weaver, editor, manager. Guys, I mean, let me tell you one thing. People used to ask me,
Sir, what should we prepare for the interview? What document, what notes we should prepare? And I surprise everything, whatever they ask you in the interview, these are there inside these notes, you know. Apart from this, I also, yes, I do share so many things I do share. And I keep sharing all this whenever it comes something new to me also. I keep this sharing everything with you guys. But yes, there is no need to prepare anything apart from this document. You know, you just need to see each and every line of this document, what is I'm typing over here as what's given to you. और मैं सच में कह रहा हूँ, अगर आप ये भी पढ़ के सिर्फ इतना ही पढ़ के आप इंटरव्यू पे बैठोगे ना, 80% ऑफ द थिंग्स यू विल गेट इट फ्रॉम हियर इटसेल्फ. जो नया है वो तो मेरे लिए भी नया और आपके लिए भी नया. We need to update this document later on. You need to tell me, sir, this was something new has been asked. So for the next time, I need to make it update. But yes, ये काफी है. इसके बाहर आपको 80% तो भी 70, 80%, 90% यहीं से हो जाता है. ठीक है, तो बस आपको अपने ही नोट्स पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है. अच्छी सारी चीजें अवेलेबल है इसमें, नो एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. So there are three different kinds of permissions. Yes, there are three different types of permission: viewer, editor, and the manager. So if I if I give this viewer permission to somebody, what he can do? He can only run the report and see the data. That's it. Viewer, I mean, the someone who can only view, and he actually doesn't have anything apart from this. He cannot perform. He couldn't perform anything else. He can just run the report and see the data. That's it. But if I give him an editor permission, now what the person can do with the editor permission, he can first of all run the report, see the data, and with the editor permission, he can even customize the report. That means he can make some changes. He can edit the report. You know, if he want, he can edit the parameters. He can make some changes because he's having this editor, but he cannot delete. Yeah, but he cannot delete. With the editor permission, what he can do, he can just run the report, he can edit the report, he can customize the report, he can make the changes, but he cannot delete the report. Now, with the manager permission, you know, somebody who's manager is actually having full control. That means the person, if I give this manager permission to some user, now that user is also become a kind of owner of this report. So what he can do, he can run, he can edit, and if he want, he can even delete the report. Okay, if he wants, he can delete the report. So these are the three different set of permissions. You know, these are the three different set of permissions that are that we can grant on the reports. And how to grant this? Let's have a practical on this. Okay, I created a folder called as Align HR report folder. Now I want to give some permissions, so I need to go to share. Go to this page, share. Okay. So share to whom? Users, roles, role subordinates, and one more thing, and that is public group. You can share this to user, you can share it to roles and the internal and external subordinates, and you can even share it to what? Public groups. Now let me just describe you what is a user so that you can at least understand. So go to this, sorry, I just forgot to tell you the navigation. Go to the setup menu, go to the administer menu. Inside the administer menu, you have an option manage users. Inside the manager user, you have this option. See. So when I click this user, I will be landed on this user interface. And here I can see that these are the number of the users that are there inside my organization. This is me. This is you. Who we are? We are the system administrator because with this email ID, we created this organization. We created this developer edition account with this email ID. So what we are the default system administrator. So we are the topmost user of this particular organization. But yes, apart from us, there are few more users. If I am this, I have a neighbor called as chatter user. I have another neighbor whose name is integration user. I have one more user, one more neighbor. These are the three people, those who are up inside my organization, inside my building. These are the three people, those who are staying with me. And these are actually Salesforce given users. I have not created. We are going to learn how to create the new users and what are the technicalities that are required to create a new user. Whenever we create a new user, three things are required. What is that? We are going to discuss. It's a very interesting topic. Security is very interesting. Let me tell you that. People, I don't know why, but people usually thought that security is a bit different. I mean, a bit difficult topic. But let me ask you one thing.
What you expect from an administrator? You are going to become a system administrator after completing this module. What do you expect from an administrator? What is the most important part of an administrator's job is to provide the security. This is the most important thing that administrator could have hands on, and that is the security. Let me tell you. Security is not tough. Security is essential. Learning everything from the security, that is, it's going to be a bit lengthy topic. I probably require 2 weeks to complete that entire topics that where we are going to see in the security. So we are definitely going to see how to create the new users. But yeah, we have 3 users along with us. We have chatter, putter karta rehta hai. We have integration user, we have security user. These many are the users that are there inside the organization. I just want you to have a glimpse, and I just want you to have an idea that we have these many users inside the organization. Let's come back to the topic. So I wanted to share with the users, because you presently don't know what is role subordinate, and the public group. So just click share it to whom? Share it to whom? I just want to share it to what? Users. So this many are the users. I mean, chatter क्यों नहीं है? तो chatter इसलिए नहीं कि उसका license अलग होता है. There are 2 different types of licenses we are going to discuss, internal and the external. Chatter is having external license. वो building के बाहर ही खड़ा रहेगा, कभी भी अंदर नहीं आएगा. ये सारी internal activities है, वो उसमें involve नहीं हो सकता. And so अब ये मैं समझाऊंगा अच्छे से. Don't worry. I'll going to explain each and every aspect of every license. Don't worry. Chatter का नाम नहीं आएगा यहाँ पे. But integration and security, these are my, I mean, these users are internal users. ठीक है. तो चलो आओ इनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं. Let's give the integration user share. Up to what level you want, what you want to that integration should become. Integration user, I want him to become the viewer, I want him to become the editor, I want him to become the manager. That's really up to us. Whatever the reports we are going to construct, whatever the reports we are going to create, we are going to store these reports inside a folder called as align HR report folder. We created this folder for this purpose only. So अभी क्या होने वाला है कि मैंने फोल्डर तो बना दिया हूँ, मैं रिपोर्ट्स भी बनाने वाला हूँ, आप भी बनाने वाले. And every report, whatever we are storing, whatever we are creating, I created this report, यहाँ store हो जाएगी. ठीक है. I create this report, going to be stored inside this folder. I create this report, ये भी यहाँ स्टार आ जाएगा. Every report, whatever I am going to create, I am going to store all this inside this folder. अब इस फोल्डर को, इस फोल्डर पे हम क्या एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इस यूजर को और इस यूजर को. इट ऑल डिपेंड्स. उसके हिसाब से पता चलेगा कि ये लेवल ऑफ एक्सेस क्या रहेगा. ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, ये सारी एचआर अलाइन एचआर रिपोर्ट्स फोल्डर में स्टोर होने वाली. और जो भी लेवल ऑफ एक्सेस आप देंगे इनको, उसके हिसाब से ये लोग इसलिए इन सारी रिपोर्ट्स को एक्सेस कर पाएंगे. तो वही हम डिसाइड कर रहे हैं, उसी पर डिस्कशन चल रहा है हमारा. तो हम ये देखेंगे, हम इंटीग्रेशन यूजर को, लेट्स मेक द इंटीग्रेशन टू बी द वीवर, एंड सिक्योरिटी यूजर, लेट्स मेक द सिक्योरिटी यूजर टू बी द एडिटर. Let me done this. So now I have this, because I'm training my Salesforce batch 105. This is this is us. So we are what? We are the managers. Apart from us, I have given integration user can only see the report. He can run the report. He can just see the data because he's a viewer permission. Security user can run and make some changes inside. If any security user logins, he can even edit the report. Okay, and we have the full control. So these are the 3 users, and we have provided them level of the access. We have shared these reports to them with this level of access. Close it. Okay, and this is the thing what you can do. This is the only thing what you can do with the standard folders. Like if you open any of the standard folder, like you open the opportunity reports, you can share it. You can share this. You can share this. You cannot delete this. You can go and again decide what level of access you can give to them. अब क्या होगा, जब आगे और users भी create हो जाएंगे ना, we come back to this, we will see the names of all those users over here. Apart from these 3, we are going to see some more names. These, and they will be those user वो जो हम create करेंगे आगे चल के. I created one more user, for example. उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा. I created one more user, उसका नाम आ जाएगा, उसका नाम. तो वो user to user कौन सा permission देना है, वो सारा यहाँ पे display होगा. And then you will decide कैसा करना है आगे चल के. तो वो कुछ चीजें जो आप आगे चल के भी सीखने वाले हो. ठीक है. So I created a folder. I have given the level of access. ये भी हो गया. Now the time to discuss about the reports. What are the different types of reports? ठीक है. So I have written some of theory.
यू नीड टू गो विद इट। आप इसकी ये थ्योरी वगैरह जो भी है आप अपने से पढ़ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। अनदर इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स, ठीक है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स: टैबुलर रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट, joint report, matrix report. These are the 4 different types of reports: tabular, summary, joint, and matrix. Okay. Now, don't expect me to complete this all in the single lecture or probably the 2 lecture. ये मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है, ये मैं डिसाइड करूंगा। मुझे जितना एक्सप्लेन करना है मैं उतना एक्सप्लेन करूँ, तब तक जब तक कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा वक्त लग सकता है मुझे। चलिए, टैबुलर रिपोर्ट, द वे वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट, टैबुलर। अब सबसे प्लेन, सबसे सिंपल टाइप की रिपोर्ट, टैबुलर रिपोर्ट, ठीक है। तो टैबुलर रिपोर्ट क्या है? सबसे बेसिक टाइप का रिपोर्ट है, और इस तरह की रिपोर्ट पर चैट कंपोनेंट्स नहीं बनाए जा सकते। यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ये सेंटेंस नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। व्हाट आर चैट कंपोनेंट, व्हाट इज डैशबोर्ड कंपोनेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पढ़ लेंगे। बस एक सेंटेंस बोलना था मुझे, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, दैट्स इट। अगर ये नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आगे चल के हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि इन चारों रिपोर्ट्स में से वो कौन सी रिपोर्ट है जिसमें हम चैट कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो कौन सी रिपोर्ट है जिसपे आप चैट या फिर डैशबोर्ड कंपोनेंट बना सकते हैं। Altogether there are 4 different types of report, but not on every report you can create a chat component. तो कौन सी रिपोर्ट है देख लेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंटली एक बात तो पता चल गई, अभी पकड़ ली कि टैबुलर रिपोर्ट पर चैट कंपोनेंट नहीं बन सकता। बस ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी कौन सी है वो देख लेंगे, छोड़ दो, आगे बढ़ते। यूज केस, कॉन्फ़िगर अ टैबुलर रिपोर्ट टू रिप्रेजेंट द अकाउंट्स रिकॉर्ड। मतलब अकाउंट रिकॉर्ड पर मुझे रिपोर्ट क्रिएट करनी है। आओ देखते हैं। चलिए, प्रैक्टिकल्स हमेशा ही अच्छे रहते हैं, थ्योरी कितना भी समझाओ कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए, तो एक नई रिपोर्ट बनाना है। आई वांट टू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट। क्लिक ऑन दिस बटन, न्यू रिपोर्ट, न्यू। सी द इंटरफेसेस, हाउ डज इट लुक्स लाइक। ऑब्जर्व करो, सब कुछ ऑब्जर्व करो। न्यू रिपोर्ट। अब ये आपसे पूछता है कि आपका रिपोर्ट का टाइप क्या रहेगा। वी वांट टू क्रिएट अ रिपोर्ट ऑन द अकाउंट। अकाउंट, इफ अकाउंट एंड कॉन्टैक्ट के सारे ऑप्शंस, इसको एक्सपैंड करो, यहाँ मिल जाएंगे। इफ यू वांट टू क्रिएट द रिपोर्ट्स ऑन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटीज के सारे ऑप्शंस यहाँ मिल जाएंगे। If you want to create the reports on this cases and solutions, यहाँ मिलेंगे आपको कस्टमर सपोर्ट में। अलग अलग फोल्डर्स हैं, हर फोल्डर में ऑब्जेक्ट्स हैं। लीड रिलेटेड एनीथिंग लीड में मिलेगा, कैंपेन रिलेटेड एनीथिंग। तो यहाँ तो सारे आपको मिल रहे हैं स्टैंडर्ड। कस्टम ऑब्जेक्ट्स का क्या, गो टू अदर रिपोर्ट्स। इफ यू वांट टू क्रिएट एनी रिपोर्ट ऑन द हायरिंग मैनेजर, कैंडिडेट, बुक, ऑथर, ये सब क्या है? These all are what? These all are your custom objects. If you want to create any report on the any of the custom object, सर पोजीशन क्यों नहीं है यहाँ पे? पोजीशन क्यों नहीं है यहाँ पे? Because position is in the master detail with the hiring manager. So whatever you decide on the hiring manager, sharing and the security setting of the child depends on the parent. We have learned this, you know, we have learned this as a difference between lookup and the master detail. So that is why you cannot see position object, but you see the candidate. Why? Because between position and the candidate there is lookup relationship. मैंने देखा नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको. So you want to have anything on the position, go with this option, hiring manager with position. If you want to anything, if you individually want anything on the position, there is no option. Why? Because between hiring manager and position, there is a master detail relationship. So this is what the concept. जो आपने वो टॉपिक पढ़ा था ना, वो आपने जो लाइन पढ़ी थी, वो डिफरेंस पढ़ा था, वो पॉइंट कि the sharing and the security setting of child is completely owned by the parent in case of master detail. In case of master detail, and in case of lookup, a child is having a different set of functionality, different set of settings, security, जो कुछ parent is having a different set of sharing and the security permissions, whatever. ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, देखो ये चीज हल्की हल्की नजर आना शुरू हो चुकी है अब अपने कैंडिडेट विद द पोजीशन। सी कैंडिडेट रिलेशनशिप जहां जहां पे नजर आ रही है वहां पे ये चीजें नजर आ रही है। अभी धीरे धीरे और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। हायरिंग मैनेजर विद पोजीशन एंड द कैंडिडेट, व्हाई? बिकॉज ये तीनों आपस में रिलेटेड है। Hiring manager related to position, related to what? Candidate. If you want to construct any report on these three, this is the option. So you can create a report. क्या है अभी पढ़ा अपन ने? Report is what? A collection of record.
contains a collection of record either collected from one object or more object. One object or more object. Single object, more object, two object, single object, three or two object, author, books. ये see I created this what kind of relationship for this. ये वो junction object जो बनाया था मैंने. Many to many. Many to many. ये बनाया था मैंने. Probably आप लोगों ने पूछा था किसी ने तो मैंने बना के दिखाया था. Hiring manager position देखो तो अगर ये report बनाओगे इसके ऊपर तो many objects collect होगा. Yes, what is report now? Report is a collection of data could be collected from either from a single object, either from multiple objects. Okay, now clear. Let's come back to the use case. Use case is what? Let's create a report, a tabular report on the account. So I'm selecting account. I expanded this folder. I expanded this folder. I select account. And then create. Go to the bottom. You will see in the bottom right corner, you have these two buttons. Click on the create. Click on the create. So for the first time, this is going to show some of the notifications. Just close it. This is my report. Sir, where it is? I cannot see. This is my report. Sir, where it is? I cannot see. This is your report. This is your report. Confused? Sir, kaise? I don't understand. Okay, koi problem. You are going to learn each and everything step by step. Guys, there are few sections over here. This is the first section. What are the things what you are see over here? Let me discuss that also. There's another section I can see over here. Up to this, there's one more section. This is one more section. Now I can tell you that, and you can even see that this user interface is being divided into 3 sections. There are 3 different sections over here. Come to this section. What is this section? These all are the fields of account object. Inside the account object, I have all these fields. Rating, industry, whatever. These all are the fields of the account. Addresses, billing addresses, whatever. These all are what? These all are the fields. So in the left-hand side, what I see, I can see, I'm going to dictate what we are going to use the bucket field. क्या है बाद में आएंगे इसके ऊपर. ये interview question है, important thing. बाद में आएंगे. On the left-hand side, I can see all the fields of that object which I have selected to be constructed on the report. I selected this account object. So on the left-hand side, I can see all the fields from account object. If it is contact, I will be visible in all these fields are going to be the fields of the contact. If it is hiring manager position, we can see the fields of hiring manager and position over here. So now you get this particular section is used to display all the fields of that particular object what you have selected. If you selected hiring manager position candidate, all the 3 objects are going to be listed. All the fields from that 3 object, hiring manager field, position field, candidate field, they all are going to be listed out over here. Right? So this is what? This is why, sorry, what is the purpose of this? The purpose is to display the fields. Okay. Chalo, ye clear ho gaya. This is for why? This is the filter section. Iska kya use hai? Batane wala. Now this is what? This is your report. This is your report section. What kind of report is this? Tabular. Sometimes they ask you this. Let me. अब जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना, अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा इंटरव्यू ले, इसकी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, बारीक चीजें जिसको पता है, शायद वही ये क्वेश्चन कर सकता है. Whenever you open any report, whenever you construct any report, whenever you create any report, what is the default type of any report? What is the default type of any report? Whenever you construct, we hata diya. What is the default type of any report? Answer is tabular. I have not written this in the interview question. Guys, please write it down. Because all you people, जितने भी सारी मेरी क्लास में गजनी बैठे हुए हैं, with everybody is having this short-term memory loss concept. ये मैंने कल ही देखा. So please, I don't believe on your memory, not anymore. Please write it down. What is the default type of any report? Tabular report. What is the default type of any report? Tabular report. Whenever we construct any report,
Even if I want to have summary report, even if I want to create, matrix report, even if I want to create joint report, whenever I land on this interface, the first kind of report is tabular. अब वो अलग बात है कि tabular से आप summary पे जा सकते हैं. You can create matrix, you can create joint. लेकिन what is the default type of every report? It is tabular. For the first time, whenever we create any report, that report is tabular. हाँ, अब उसके आगे बढ़ो, फिर आप देखो उसको समरी कर लो. आप चाहे तो उसको मैट्रिक्स बना लीजिए, आप चाहे तो उसे जॉइंट बना लीजिए, वो अलग बात है. क्वेश्चन ट्रिकी था. क्यों ट्रिकी था? क्योंकि ये किसने पूछा? उस बंदे ने पूछा जिसने वाकई में बहुत काम कर रखा है, जिसे बारीक बारीक चीजें ऑब्जर्व की हो. आप भी उनमें से एक ही हो. बस ये कि आंखें खुली रखो, कान खुले रखो. पहली बार जब भी आप लैंड करोगे, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके लैंड कर लो. मैंने अकाउंट लेके लैंड किया, कॉन्टैक्ट लेके लैंड करूं, पोजीशन लेके लैंड करूं, जब भी इस इंटरफेस में आऊंगा, हर बार लगातार एक ही तरह की रिपोर्टिंग, टैबुलर. अलग बात है कि हम टैबुलर से कन्वर्ट करते हैं आगे चल के, वो आप सीखेंगे अभी. लेकिन अभी तो मेरा मुद्दा ही टैबुलर रिपोर्ट है. चलो, तो मैं टैबुलर ही बनाने वाला हूँ. तो अगर ये क्वेश्चन आया ना, तो समझ जाना कि ये क्या पूछ रहे हैं. ये पूछ रहे हैं कि जब भी हम इनिशियली लैंड करते हैं इंटरफेस पे, तो हमें किस तरह का रिपोर्ट नजर आता है, और वो है टैबुलर रिपोर्ट. चलिए 2 मिनट दीजिए, पानी पी रहा हूँ. देखिए, अब इसके बाद whatever the columns you want, you can decide. Presently on this report, I can see account owner, account name, type, rating, last activity, last modified billing state. आप if you don't want account owner, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे माउस क्लिक करो, ड्रैग करो, ड्रॉप करो, हट गया. एक तरीका तो ये. मान के चलिए बहुत सारे कॉलम्स से आपका कोई भी काम करनी, रिमूव ऑल कॉलम्स, ठीक है, वो भी एक तरीका है. एक ही बार में सारे हटा लो. लेकिन कैसा? टाइप, अकाउंट नेम, टाइप और रेटिंग काम के देख रहे हैं. मैं लास्ट एक्टिविटी हटा देता हूँ, ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ, हटा देता हूँ. अब डिसाइड करो भैया, यहाँ से लेके जाओ कौन कौन से कॉलम्स आप दिखाना चाहते हो आपकी रिपोर्ट्स पे. तो ये कैसा अपनी चॉइस नहीं रहती, इसका भी डॉक्यूमेंट रहता है, आईडीडी रहता है. इसके लिए मेंशन रहता है कि ऑन दिस रिपोर्ट आई शुड हैव दिस फील्ड्स. ये मेरे को विजिबल होना चाहिए. कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, आपकी बैच में भी दिया था. आई डोंट नो वेदर आई हैव गिवन इट टू यू गाइस और नॉट. आई हैव मैंने एक दिया था, कहाँ दिया था, लेट सी. आई हैव मेंशन नथिंग. कुछ भी मेंशन नहीं किया था, डायरेक्ट यूज केस दे दिया था मैंने. मैं देखा, चलो देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर. कहाँ है? आई हैव गिवन वन एग्जांपल यार, SFD1 एक बंदे ने सॉल्व किया था. सी, दिस वाज द मैंने क्या दिया था यूज केस. और ये रियल टाइम यूज केस है. ये यूज केस रियल टाइम है. ये मेरे को पूछा गया था. So in the Salesforce, I want to see which user is associated with this license. मैंने बस एक ही सवाल पूछा उनसे, आप कैसे देखना पसंद करेंगे इसको. I can show you which user is having which license. Even I can show you some more information. What you want to see, what are the fields you want to see. आप कैसा देखना पसंद करेंगे. तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या है. मैंने I can show you on the report. I can show you with the help of SOQL. मैंने SQL क्वेरी लगा के भी दिखा सकता हूँ. They told me कि ठीक है, हमको रिपोर्ट्स में ज्यादा सही रहेगा. तो बिल्कुल यही वे में I have given this answer. बिल्कुल यही वे. So I created a report, a tabular report. ठीक है. एक्चुअली अब ये कैसे सॉल्व होता है कि यूजर लाइसेंस नाम की फील्ड नहीं होती है ना. यू नीड टू क्रिएट अ फार्मूला फील्ड फॉर दिस. विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला फील्ड, you need to see for which user what kind of license is there, or then display it on the report. उसको रिपोर्ट में डिस्प्ले करो. So this is how they ask me, this is how they ask me to display एक रिपोर्ट बना के दे. मैंने कहा ठीक है, बना के दे देता हूँ. अदरवाइज एल्स आई कैन शो इट विद द सॉकेल में दे सकता हूँ, विजुअल फोर्स पेज में दे सकता हूँ, कई तरीके से. मैंने बस ये पूछा कि आपको देखना कैसे पसंद करो. यूज केस तो मुझे क्लियर है. मुझे पता है कि आपको बस ये चाहिए कि कौन से यूजर के साथ कौन सा लाइसेंस एसोसिएटेड है. आई वाज वेरी क्लियर विद दिस. आई जस्ट वांट यू कि भैया आप मुझे ये बताओ आपको देखना कैसे पसंद करोगे. तो ही टोल्ड मी कि ठीक है, मेरे को रिपोर्ट बना के दो. तो पंकज हैज डन द एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाट आई हैव डन. सो आई वाज अमेज्ड कि चलो सही जा रहे हैं बंदे लोग. ठीक है. तो देखिए ऐसा होता है ना. तो यूज केस क्या है, उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कॉलम्स हमने डिस्प्ले करना है.
So account name, type and rating. Apart from this, type is also there. I want to have annual revenue. So एक तरीका तो ये होता है, देखो ड्रैग करो ड्रॉप करो, एक तरीका तो ये, ठीक है। एक और तरीका बताता हूँ। इफ यू वांट टू हैव द इंडस्ट्री, जस्ट मेक अ डबल क्लिक ऑन द इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्री इज गोइंग टू बी अपेंडेड एट द लास्ट ऑफ रिपोर्ट। अब ये दोनों तरीके में डिफरेंस क्या है वो भी देख लो। एक तरीका समझ में आया आपको, लाइक एनुअल रेवेन्यू, आई हैव ड्रैग इट ड्रॉप, इंडस्ट्री पे आई हैव मेक अ डबल क्लिक, यू नो। इफ आई वांट टू सी द ओनरशिप, तो अब देखो अगर ओनरशिप में ड्रैग करके लाता हूँ तो मैं उसको यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ। ये कब, जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ड्रैग नहीं करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, तो वो लास्ट में ही आता है। अगर आपको पहले चाहिए तो फिर एक एडिशनल स्टेप, ये एक एडिशनल स्टेप। अरे क्या हो रहा है, हाँ ये, तो ये बस छोटी सी बात है, लेकिन बात तो है ना, छोटी सी बात तो है। चलो, तो वो आप देख लो कैसा क्या पसंद करेंगे आप, डबल क्लिक या ड्रैग। बिलिंग एड्रेस, बिलिंग सिटीज देना चाहते हैं तो दे दीजिए, कंट्री देना चाहते हैं दे दीजिए। फोन, आई थिंक फोन इज नॉट देयर, लेट मी हैव दिस ओवर हियर, let me have the facts over here, and let me have the website at the end. Active status, I want it over here. Customer priority, I want it to be have over here. Where is it? आखिरी में गया क्या? Customer priority, ठीक है। और कुछ लाना है? I think this much is sufficient. You know, this much is sufficient. Just a second. Guys, एक मिनट, एक second. I think this is something which is very urgent. एक सेकेंड ना, तो थोड़ा सा अर्जेंट लग रहा है। यस, सो तो अभी आपने देखा कि व्हाट आई हैव डन, आई हैव सिलेक्टेड दिस, कौन कौन सी फील्ड्स हमें रिपोर्ट्स पे दिखानी है, और वो हमने यहाँ पे सबसे पहले एज अ कॉलम हमने सारी फील्ड्स को अरेंज कर लिया है, ठीक है। सो प्रोस्पेक्ट टाइप हटा देता हूँ, टाइप इज नॉट एट ऑल, ओनरशिप भी उतना इम्पोर्टेंट, ठीक है। इतनी चीजें रखता हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आई कैन सी देयर इज ओनली 2 रिकॉर्ड्स, लेकिन मेरे अकाउंट ऑब्जेक्ट में अगर मैं जाऊँ तो अकाउंट ऑब्जेक्ट में काफी सारे रिकॉर्ड्स हैं। इफ आई क्लिक दिस ऑल अकाउंट्स, आई कैन सी ऑलमोस्ट देयर आर 16 रिकॉर्ड्स, 16 रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? तो यहाँ पे ना सर्टन फील्ड्स लगी हुई है ना, ये कुछ फिल्टर्स लगे हुए, ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज शोइंग माय अकाउंट्स ओनली, वही अकाउंट जो हमने क्रिएट किया। आई डोंट वांट दिस, आई वांट टू सी ऑल अकाउंट्स। सो क्लिक ऑन दिस एंड सिलेक्ट ऑल अकाउंट्स, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे डेट की फील्ड लगी हुई है, वो भी हटाइए, क्रिएटेड डेट, रेंज कस्टम, ठीक है। तो एक्चुअली आई वांट not a custom, I don't want this record to be those who are created beyond this. No, 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 I want the records that are created at any time, all time, at any time, all time. Now see, all together 16 records. अब ये रिपोर्ट ऐसी क्यों दिख रही है? एक्चुअली ये आपका वो जगह है जहाँ पे आप रिपोर्ट्स पे काम करते हो ना, एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड रिपोर्ट बिल्डर। दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड रिपोर्ट बिल्डर। यहाँ पे आप रिपोर्ट बिल्ड करते हैं, ठीक है। जो भी आपको कस्टमाइजेशन करने वो सारे यहाँ करते हो। अब आप इसे रन करेंगे तो यू विल एक्चुअल सी हाउ डज द रिपोर्ट लुक्स लाइक। नाउ दिस क्लोज टू दिस एंड रन द रिपोर्ट। सो दिस इज हाउ अ रिपोर्ट, ये है एक रिपोर्ट। व्हाट इज अ रिपोर्ट? Report is an arrangement of rows and the columns. Report is what? Report is a table where I can see all these are the heads. These are the column names. Columns name are the field names. And then there is a record. There's a record. This is what? This is a report. What kind of report? Tabular report. What kind of report is this? This is a tabular report. This is a tabular report. ठीक है, इस तरह से reports नजर आती हैं। You can decide how many number of the fields you want to be displayed on here, and that depends what kind of document has been proposed to you.
जो डॉक्यूमेंट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है, ठीक है। अब व्हाट यू कैन डू विद दिस रिपोर्ट, चलिए अब कुछ चीजें हैं जो हमको यहाँ पे समझनी है। सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन रन द रिपोर्ट, आई कैन शेड्यूल्ड अ रिपोर्ट। मैं बताता हूँ ये क्या है, इसके ऊपर हम आते हैं, शेड्यूल्ड रिपोर्ट। उसके अलावा इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, यू कैन क्लिक दिस कस्टमाइज बटन, यू कैन अगेन गो बैक टू द रिपोर्ट बिल्डर। सी यू लैंडेड, यू कम बैक टू रिपोर्ट बिल्डर कस्टमाइज करने से। रन द रिपोर्ट, वापस आ गए यहाँ पे। सेव एज, रिपोर्ट को सेव कर सकते हैं, तो चलो सबसे पहले सेव ही कर लेते हैं। रिपोर्ट नेम, टैबुलर रिपोर्ट बनाया है मैंने यूज केस नंबर 1 की। टैबुलर रिपोर्ट बनाया है मैंने यूज केस नंबर 1 के लिए, तो मैं ये नाम दे दे रहा हूँ। यू कैन गिव एनी नेम, आप जो चाहे वो नाम दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कहाँ पे स्टोर करना है, द माई पर्सनल कस्टम, नो 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 नो, वी क्रिएटेड वन फोल्डर अलाइन एचआर रिपोर्ट, यहाँ पे स्टोर करना है। सेव इट, सो आई सेव द रिपोर्ट, रिपोर्ट सेव कर लिया मैंने, यहाँ पे फोल्डर के अंदर आ गई। लेट्स अगेन गो बैक टू दिस रिपोर्ट, क्लिक करिए, वापस आ गए आप इस रिपोर्ट, ठीक है। सेव कर लिया है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। प्रिंटेबल व्यू पे जाना है तो प्रिंटेबल व्यू, और अगर आपको सिस्टम पे डाउनलोड करना है, इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस रिपोर्ट, प्रेजेंटली दिस इज ऑन द सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स पे है, क्लाउड पे है। इफ यू वांट टू डाउनलोड द रिपोर्ट, एक्सपोर्ट द डिटेल्स। इफ यू वांट टू डाउनलोड इट ऑन योर लोकल सिस्टम, एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट जब आप करते हैं तो दो तरह से आती हैं, या तो आप एक्सएलएस ले सकते हो, यानी नॉर्मल जो एक्सेल फॉर्मेट रहता है, या फिर सीएसवी। सीएसवी इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, नो सीएसवी इज व्हाट, सीएसवी इज एक्चुअली अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आई विल शो यू हाउ डज एक्चुअली सीएसवी लुक्स लाइक, लेट मी शो यू। सीएसवी ही चलता है जब हम बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। सीएसवी थोड़ा सा अभी बात निकली, इसलिए सीख लो, जो जो मैं बता सकता हूँ सब बता देता हूँ आप। हाउ डज अ सीएसवी लुक्स, whenever we perform the integration, जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं और डेटा ट्रांसफर करते हैं, see how does this looks like, this is a CSV फॉर्मेट है ना, ये होता है CSV, ऐसा दिखता है CSV कॉमन। और इसका यूज क्या है, whenever I perform the integration, इंटीग्रेशन में जब मैं इनपुट प्रोवाइड करता हूँ, लेट मी शो यू दैट, पोस्टमैन अभी बंद किया। तो जब भी हम वेब सर्विसेज को इनपुट देते हैं जेसन के फॉर्मेट में यूजिंग द रेस्ट एपीआई, पढ़ने वाले हो आप आगे चल के, तो वी यूज दिस CSV फॉर्मेट, ठीक है। थोड़ा सा देख लो इस चीज को, बात निकली, एक सेकंड देख लो, कोई बुराई नहीं है। हाउ डज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लुक्स लाइक, तो एक्सेल का बड़ा काम है, इंटीग्रेशन वगैरह में बड़ा काम की चीज है एक्सेल, ठीक है। तो सी हाउ डज इट लुक्स लाइक, एक सेकेंड ना। हाँ, सो सी दिस इज व्हाट, दिस इज अ CSV इनपुट, ये CSV इनपुट, दिस इज वन ऑफ द CSV, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट प्रोवाइड किए जाते हैं, सैंपल डेटा है, ये मेरा मतलब एक वेब सर्विस एक तरह का काम कर रहा हूँ, सेंड दिस, ये इस तरह से डेटा हम भेजते हैं वेब सर्विसेज को। मैंने अभी एक एक डेटा भेजा है सेल्सफोर्स को, एंड दिस इज माय रिस्पांस। तो जब भी आप काम करोगे आगे चल के, तो आपको CSV थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है CSV बेसिकली। चलो वापिस आते हैं। सो अभी मैं CSV पे नहीं, एक नॉर्मल एक्सेल फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करता हूँ। तो दो तरह के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द सेल्सफोर्स, यू कैन डाउनलोड इट इन द फॉर्म ऑफ CSV, इधर इन द फॉर्म ऑफ XLS। सो मैं XLS में डाउनलोड करता हूँ इसको, चलिए एक्सपोर्ट करके बटन है ये दबाइए, आपका रिपोर्ट बन के तैयार है, डाउनलोड भी हो चुका है। लेट्स ओपन दिस एंड सी हाउ डज इट लुक्स लाइक, रिपोर्ट कैसा दिख रहा है, ठीक है। सी हाउ डज इट लुक्स लाइक, यस। So this is how a CSV file looks like. This is how a CSV file. ठीक है। Let me the few of the formatting. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। Now see how does it looks like. ये मेरा अकाउंट ऑब्जेक्ट का पूरा डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, अपने एंड पे। What is this अकाउंट नेम, ये सारे अकाउंट नेम है आप, दिस ऑल डेटा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड है एक्टिव स्टेटस। नाउ यू कैन इन, आप इसको, अब ये तो CSV का फीचर है, मुझे एक्सेल का फीचर शायद आपको पता ही होगा। आप सॉर्ट आउट कर सकते हो यहाँ पे इसके बेसिस पे अकाउंट, एक्टिव स्टेटस के बेसिस पे, एक्टिव स्टेटस यस और नो है, कस्टमर प्रायोरिटी के बेसिस पे जो भी वैल्यूज है यहाँ पे, हाई लो मीडियम के हिसाब से। तो ये तो खैर एक्सेल का फीचर है, इसका सेल्सफोर्स से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यू कैन लाइक यू कैन डू दिस।
तो आप ये चाहें तो इस तरह से कर सकते हो आप। तो बिलिंग सिटी, फोन सिटी, जो भी थे सारे कॉलम्स आपके डाउनलोड हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी वेन एवर वी डाउनलोड एनी रिपोर्ट, दिस इज हाउ इट डस लुक लाइक। ठीक है, तो ये तरीका है रिपोर्ट्स को डाउनलोड करने का। अब यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो कि देर आर फ्यू ऑफ द कॉपीराइट इंफॉर्मेशन ऑल्सो, है ना। तो एक छोटी सी बात है, मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही देता हूँ, मतलब छुपाने से क्या रखना, बात भी तो क्लियर कर देता हूँ। एक छोटी सी सेटिंग है, अगर आप वो करोगे तो ये कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन हट जाती है। एक्चुअली ये भी एक बार आया था मुझे यूज केस में, तो फिर मैंने सॉल्व किया था इसको। क्या होता है कि जब हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो रिपोर्ट कम अप विद सम ऑफ द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक नेम ऑफ द कंपनी एंड सम ऑफ द कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, इट डज कम अप विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब अगर एक या दो रिपोर्ट है, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंडिविजुअली लाइक डू दिस, हटानी है तो ऐसे कर सकते, दिस इज अ सिंपल थिंग। सबसे सिंपल तो ये तरीका है, राइट। अगर मुझे एक या दो रिपोर्ट डाउनलोड, बट मान के चलो कि but by some workflows or like process builder, actually we are downloading thousands of the report in a day, तब ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअली इसको कर सको। तो उसके लिए फिर एक बार बात निकली थी ऐसी कि क्या इसको कोई अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर मैंने सर्च किया, तो ये आई गॉट वन सेटिंग, मतलब मेरे को एक सेटिंग के बारे में पता चला कि यस देयर इज अ सेटिंग, और ये नहीं है नोट्स में नहीं है, तो प्लीज आई थिंक है, मैंने लिखा कि नहीं लिखा, रुको तो देखने दो। नहीं, मैंने शायद नहीं लिखा, तो ठीक है। तो ये जो बता रहा हूँ ध्यान से आप लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए। तो अगर इफ यू वांट टू रिमूव दिस, कहाँ गया यार, इफ यू वांट टू रिमूव दिस, एक मिनट ये क्लोज कर देता हूँ। Yes, if you want to remove this all additional copyright information at the bottom of the report, we can see this additional copyright information. What is the setting? मैंने भी एक ही बार काम किया था इसके लिए, देखते हैं मुझे सेटिंग याद है क्या। शायद याद है, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। सेटअप, गो टू द सेटअप मेनू एंड probably go to the customize menu, site the customize menu, I think let me see, हाँ मैंने भी काफी पहले काम किया था। yes, reports and the dashboards, ठीक है। so here we have something called as reports and dashboard settings, क्या यही है। तो यहाँ पे आपको जाना है, एक बार फिर से बता देता हूँ, go to the setup, go to the build, go to the build, expand the customize, customize के अंदर you have a setting, reports and the dashboard, reports and dashboard में reports and dashboard settings पे जाइए, and on this particular user interface you see there is confidential information disclaimer setting, ये वाला। on this section we have this exclude disclaimer information from whatever, just click these two check box and it's going to be make that entire settings वो सारी हट जाएंगी वहां से। सेव, इसको सेव करो। अब फिर से एक बार रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, ठीक है। लेट्स वंस अगेन डाउनलोड, लेट मी क्लोज दिस, नहीं क्लोज नहीं करता हूँ, इसको रहने देता हूँ साइड बाय साइड। लेट मी वंस अगेन एक्सपोर्ट दिस और फिर इसको ओपन करता हूँ, जैसे एक डिफरेंस पता चल जाएगा अपने को दोनों के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से वो चीज हट गई, यहाँ से वो चीज हट गई, लाइक प्रेजेंटली वी डोंट हैव दैट थिंग। अब आप इस रिपोर्ट को कंपेयर करो, यहाँ नीचे में कुछ भी नहीं है। इसके पहले जो रिपोर्ट थी आपकी यहाँ साइड में, इट्स हैव सम कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन। सेकंड रिपोर्ट में नहीं, डेटा इज सेम बट यू डोंट हैव एनी कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन ओवर देयर। सो दिस इज द वे टू एक्सक्लूड दैट कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिपोर्ट। अगर एक दो रिपोर्ट है तो फिर हम ऐसे मैनुअली डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर थाउजेंड्स ऑफ द रिपोर्ट्स के साथ आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिर ये सेटिंग जो आपको अभी सिखाया है, इसकी मदद से आप रिपोर्ट्स में से कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड होने से क्या कहते हैं उसको बचा सकते हैं, राइट। तो दिस वाज वन थिंग। आइए अब सेकेंड चीज जो हमको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है, वो है हाउ टू शेड्यूल द रिपोर्ट। तो ऑल्दो यू कैन रन अ रिपोर्ट, देयर इज वन मोर ऑप्शन टू शेड्यूल अ रिपोर्ट। जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो तो एक तो ये है कि आप चाहें तो उसी वक्त रन करें उसको, या फिर वी कैन डिसाइड कि हम फ्यूचर रन्स, मतलब बीच बीच में हमारी आफ्टर आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रन होना चाहिए, और रिपोर्ट शुड कलेक्ट द लेटेस्ट डेटा। हो सकता है ना मैं कुछ आगे चल के अकाउंट ऑब्जेक्ट में कोई नया अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर दूं। प्रेजेंटली इट्स शोइंग में 16 रिकॉर्ड है, प्रेजेंटली इट्स शोइंग में 16। if I go to the account, I create one more account over here, I create one more account like sample new account. Now I create one more account over here. A few informations, few things, whatever. I create few, I create one more account. और इसमें मैं अकाउंट नया क्रिएट कर दे रहा हूँ यहाँ से। अब जैसे यहाँ पे ज्यादा अकाउंट्स हो गए, देखा जाए तो एक नया अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इफ आई सी हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर,
सो आई कैन सी देयर आर 17 है ना, 17 अकाउंट्स सर। यहाँ पे कितने अकाउंट्स अभी इसमें 16। तो एक तो तरीका ये होता है कि अब रिपोर्ट्स को आपको रिफ्रेश करना होता है। एक तो होता है कि रिफ्रेश करें आप फ्यूचर रन करके, या फिर अगर आप सिर्फ रन रिपोर्ट करते हैं, ये बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये रिफ्रेश हो जाएगी रिपोर्ट, एंड इट्स गोइंग टू गेट द न्यू डेटा। अब अकाउंट ऑब्जेक्ट को फिर से फेच करेगा, फिर से क्वेरी फायर करेगा, अकाउंट्स में से डेटा लाएगा, इन सारी चीजें का। नाउ यू सी देयर आर 17 रिकॉर्ड्स। एक तो ये है, मैनुअली आप इसको इस तरह से रन रिपोर्ट का बटन दबाएं और आप नया डेटा हासिल कर लें। एक तो ये है। दूसरा, शेड्यूल्ड करना रिपोर्ट। शेड्यूल्ड करना मतलब इस ऑप्शन पे जाना। ये ऑप्शन भी सारी रिपोर्ट्स में अवेलेबल नहीं होता है। शेड्यूल्ड कौन कौन सी रिपोर्ट होती है ये आप एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले टैबुलर रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है। टैबुलर रिपोर्ट के लिए लिख लिए कि वी कैन शेड्यूल दिस रिपोर्ट। टैबुलर रिपोर्ट कैन बी शेड्यूल्ड। आप टैबुलर रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। फॉर व्हाट? फॉर फ्यूचर रन्स। यू कैन शेड्यूल टैबुलर रिपोर्ट। मैं बता रहा हूँ, एक चीज से बता रहा हूँ, हर चीज मैं अपन धीरे धीरे सब सिखा रहा हूँ। पहले बारी बारी एक एक चीज स्टेप लिखो, कभी भी इस तरह से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। सो यू कैन शेड्यूल द टैबुलर रिपोर्ट्स फॉर द फ्यूचर रन। क्लिक दिस। क्या होता है शेड्यूलिंग करना? आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन वन ऑफ द इंटरव्यू। एक एडमिन का इंटरव्यू ले रहा था मैं, लेवल 1 का इंटरव्यू। आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, हाउ टू शेड्यूल द रिपोर्ट। तो हाउ कैन आई मेक अ रिपोर्ट टू बी, एक्चुअली मैंने इतना सीधा सवाल नहीं पूछा था। मैंने पूछा था कि how can I automate a report to be run periodically। मतलब मैं चाहता था कि मुझे ये आंसर मिले कि आप ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट को कैसे रन करें पीरियोडिकली। देन आई क्लैरिफाई कि फॉर एग्जांपल आई कंस्ट्रक्टेड अ रिपोर्ट, आई कंस्ट्रक्टेड अ रिपोर्ट ऑन XYZ ऑब्जेक्ट, and I want this report to be run on every Wednesday, probably after every 2 days, so that it can collect the data, latest data from the object XYZ, and it should display on the screen like this. So after every 2 days, or probably after every weekend, or after every end of the day, I want to run the report, so that it can it could collect the recent data and it could show it on the report. How we are going to do this? People, कोई किसी ने भी आंसर नहीं दिया था, यकीन मानो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। सबका यही कहना था कि विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बिल्डर, विद द हेल्प ऑफ वर्क फ्लोज। मतलब जहां भी बात आ रही थी ऑटोमेशन की, तो सबने ये सोचा कि ये वर्क फ्लोज या फिर प्रोसेस बिल्डर है। आप बताओ, आप वर्क फ्लोज प्रोसेस बिल्डर में तो फिर भी चलो लोग सोच सकते हैं, वर्क फ्लोज में कैसे ये सोचा जा सकता है? वर्क फ्लो में तो 4 ही ऑप्शन होते हैं यार। वर्क फ्लो क्या कर सकता है? लिमिटेड काम क्या कर सकता है? बताइए जरा सा, क्या कर सकता है? चलिए, कैन एनीवन टेल मी, क्या बताइए वर्क फ्लोज में क्या क्या अचीव कर सकते हैं आप? यस। व्हाट काइंड ऑफ एक्शंस ये वर्क फ्लो परफॉर्म? फाइल, Email alert, and field update, and sending the outbound message, and one is assigning a new task. assigning a new task. ठीक है, चलो देखो, जो लोग मेरे को आंसर दे रहे हैं ना, मैं सबको कैडबरी खिला दूंगा आखिरी में, बता दे रहा हूँ। मैं ट्रैक कर रहा हूँ कौन कौन मुझे आंसर दे रहा है और कौन कौन मेरे यहाँ पे खामोश है, सब देख रहा हूँ। मुझे आपको ऐसा लगता है कि मैं नोटिस नहीं करता, मैं सब नोटिस करता हूँ। ठीक है, और इंटरव्यूज में तो सब क्लियर हो जाता है मेरे को। चलो, श्वेता को भी चॉकलेट चाहिए, देखो पटाख से आंसर दिया श्वेता ने। ठीक है, तो ये 4 ही ऑप्शन होते हैं, उसमें कहीं पर भी ना रिपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। आप प्रोसेस बिल्डर में जाइए और प्रोसेस बिल्डर में देख के बताइए मुझे कि आप रिपोर्ट शेड्यूल कर सकते हैं क्या प्रोसेस बिल्डर से। एक असाइनमेंट देता हूँ। तो एक्चुअली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको रिपोर्ट्स में ही ऑप्शन होता है कि आप रिपोर्ट को शेड्यूल्ड कर सकते हो। अब ये कैसा है कि जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ाया है, जिसको ट्रेनिंग में बताया है, जिसने काम किया है, उसी को पता है। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है कोई बिजनेस ऑटोमेशन टूल लेने की, हालांकि लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रोसेस बिल्डर में देखें। ठीक है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप प्रोसेस बिल्डर में देखें, और ताकि आपको एक नई चीज पता चलेगी वहां से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वहां से देखें। लेकिन टेक्निकली कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यू हैव दिस ऑप्शन इन द रिपोर्ट इटसेल्फ दैट यू कैन शेड्यूल द रिपोर्ट। नाउ नॉट एवरी रिपोर्ट कैन बी शेड्यूल, ये भी जान लो। तो सबसे पहले तो मुझे जो आंसर एक्सपेक्टेड था वो ये था कि सर व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट डू यू वांट टू शेड्यूल, ये क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन था सबसे पहले, क्योंकि मैं चाहता था कि ये अगर इनको ये पता है कि रिपोर्ट्स खुद शेड्यूल होती हैं और कौन कौन सी रिपोर्ट शेड्यूल्ड होती है, तो एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग कि व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट यू वांट टू शेड्यूल। इफ आई नाउ से tabular, so yes, we can schedule. There is a direct option to schedule them. Whenever you go to this interface, whenever you go to this interface, you have within the run report button, it's a pick list button. You have two options. Run the report now. Run report karo, run report now karo. You are going to get the same.
सेम वो रिफ्रेश हो जाएगा, दैट्स इट. इफ यू रन द रिपोर्ट इट्स गोइंग टू बी रिफ्रेश, गेट द लेटेस्ट डेटा, गेट द लेटेस्ट एंड द न्यूएस्ट डेटा फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट, और ये भी सेम होगा. बट देयर इज एन ऑप्शन टू शेड्यूल द रिपोर्ट. So what I was expecting कि candidate should ask me, sir, what kind of report you want to schedule? Because not every report is scheduled. अब कौन सी schedule होती है, कौन सी नहीं होती, तो बारी बारी देखते चले जाएंगे अपन, है ना, बारी बारी देखेंगे. अभी फिलहाल ये चीज तो समझ में आ रही है कि हाँ, टेबुलर रिपोर्ट कैन बी scheduled, आंखों के सामने है. चलो, ये बहुत अच्छी बात है. आगे बढ़ते हैं. अब रिपोर्ट कैसे schedule करते हैं वो देखो. देखो, सबसे पहले हाँ, schedule करने के लिए ना एक यूजर चाहिए. एक यूजर जो ये फैसला करे कि कब schedule करना है. कौन सा यूजर? तो हमारे पास अभी यही यूजर है जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है. क्या होता है सेल्सफोर्स लाइसेंस, आगे देखेंगे. तो जिसके पास सेल्सफोर्स लाइसेंस है वही कर सकता है, और फिलहाल हम ही कर सकते हैं बिकॉज वी आर द एडमिनिस्ट्रेटर. अब जब ये रिपोर्ट स्केड्यूल्ड हो, तो स्केड्यूल्ड होने के बाद ये रिपोर्ट, देयर इज अ फैसिलिटी दैट यू कैन इवन ईमेल द रिपोर्ट. आप ईमेल भी कर सकते हैं किसको, मुझको, मेरे ईमेल आईडी पे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे प्लस दूसरों को. तो देखो यहाँ पे नया इंटरफेस क्रिएट हो. ये दूसरे कौन कौन हो सकते हैं? पब्लिक ग्रुप और यूजर्स. ये हैं यूजर्स जो अपन, तो अपन चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं कि हाँ भाई, इनको भी ईमेल चला जाना चाहिए. दीज आर माय मैनेजर्स, इनको ईमेल जाना चाहिए. तो जब स्केड्यूल्ड होगी रिपोर्ट, रन होगी, साथ साथ ईमेल जाएगा. ईमेल किसको जाएगा? मुझे, मैं तो हुई हूँ, मैं तो हुई ही हूँ, साथ ही ये यूजर्स. और जितने यूजर्स यहाँ क्रिएट हो जाएंगे सबके नाम यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, सबके नाम आ जाएंगे यहाँ पे. तो आप चाहें तो उनको सबको रिपोर्ट भेज सकते हो. ये भी एक वे है. अब ये बताओ कि इसके लिए ईमेल भेजने के लिए, वैसे तो ईमेल अलर्ट आपका वर्कफ्लो में भी है, ईमेल अलर्ट आपका प्रोसेस बिल्डर में भी है. क्या यहाँ पे उसकी जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं. दिस इज द डिफॉल्ट ऑटोमेशन इनसाइड द रिपोर्ट. ये ईमेल करना, दिस इज द डिफॉल्ट ऑप्शन. नाउ इफ द नेक्स्ट टाइम इफ आई आस्क यू, आई वांट टू रन अ रिपोर्ट एंड आई वांट टू ईमेल द रिपोर्ट, you tell me what kind of automation you are going to use. Never say that we are going to use workflow and the process builder. No, rather what you say to me is that, sir, there is a default option, there's a default ye aapka business automation inside the scheduling of the report. You can, whenever the report is scheduled, there's an option to send the email directly, either to the single user, either to the multiple users. There's a direct option. ये बता सकते हैं आप. देखो, बारीक बारीक बात है. मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता मुझे ये 4 रिपोर्ट समझाने में कितना दिन लगेगा. क्यों? क्योंकि मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ता. ये चीजें नहीं पढ़ाते कोई भी. हमको तो बताया ही नहीं गया था, शायद रिपोर्ट भी सही तरह से नहीं पढ़ाई थी. अब जिसने भी, बहरहाल जिसने भी पढ़ाया, जैसा भी पढ़ाया, चलो उसका एहसान ही है हमारे पे, वरना आज इस फील्ड में नहीं होते. लेकिन अभी आप मेरे से एसोसिएटेड, और मैंने जितना सीखा है ना, मैं सब सिखाता हूँ, हर चीज. तो जो मैंने क्वेश्चन डाला ना, वो सच में मेरे को दिया हुआ क्वेश्चन. मैं देखना चाहता था कौन कौन इसमें दिमाग लगा. तो कुछ भी नहीं बस छोड़ता हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ सच में. अगर मैं भूल गया तो वो अलग बात है, लेकिन मैं छोड़ता नहीं हूँ. तो स्केड्यूल्ड करने के लिए और ईमेल भेजने के लिए ना अपने को ऑटोमेशन नहीं लगता, ये डायरेक्ट एनालिटिक्स का पार्ट है. ये एनालिटिक्स यानी रिपोर्ट्स के अंदर का ही फीचर है ये. चलो अगली बात, ये एक चीज समझ में आ गई, तो अगली चीज समझते हैं. अगली चीज ये है कि स्केड्यूलिंग कैसी होती है. स्केड्यूलिंग होती है डेली, वीकली या मंथली. डेली के ये ऑप्शन है, एवरी डे या एवरी वीक डेज. वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे नहीं. अगर आप सैटरडे संडे को भी रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, हर दिन की रिपोर्ट भेजना चाहते हैं, एवरीडे सिलेक्ट करें. दूसरा ऑप्शन वीकली. वीकली में कब 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 आप भेजना चाहते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेके जब. तो मंथली, तो मंथली यानी कब, स्टार्ट डेट एंड डेट टू, या फिर ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, या ऑन द 10th ऑफ एवरी मंथ, है ना, कहां से लेके कहां तक. या फिर वैसा नहीं तो फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी मंथ, ऐसा भी चलता है. तो ये सब स्केड्यूलिंग के पैरामीटर्स है. टाइम सेट करना चाहते हैं तो अवेलेबल ऑप्शंस देखिए आप, कौन कौन से ऑप्शंस है. अभी ये यहाँ पे 1 4 10 क्यों दिख रहा है? ये यूएस में उस हिसाब से चल रहा है यहाँ, ठीक है. यूएस में जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा है. यू कैन इवन कस्टमाइज दैट ऑप्शन, ठीक है, आप वो भी कस्टमाइज कर सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस हैं यार, ये सारे ऑप्शंस हैं स्केड्यूलिंग के. और इससे बहुत सारी चीजें सीखने के लिए. थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे होमवर्क करोगे ना, तो काफी कुछ सीख के बाहर निकल. ये होते हैं स्केड्यूलिंग. रिपोर्ट आपकी स्केड्यूल्ड भी होती है, रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट ईमेल भी होती है. और स्केड्यूलिंग का कैसे स्केड्यूलिंग करना, कब रिपोर्ट जनरेट करना, तो उसके डेली, वीकली और मंथली 3 ऑप्शन है, मेजर 3 ऑप्शन. ठीक है, ये सारा एनालिटिक्स बहुत डिटेल्ड है एक्चुअली, इतना सिंपल नहीं है एनालिटिक्स. एनालिटिक्स बहुत डिटेल्ड है. और रिपोर्ट्स डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है कि हर चीज, सुनो, हर चीज, हर काम का रिप्रेजेंटेशन रिपोर्ट से होता है, डैशबोर्ड से होता है. इसको हल्के में मत लो, छोटा सा टॉपिक है ये.
लेकिन याद रखो कल चल के जब एडमिन बनोगे ना, तो कोई भी चीज जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, डैशबोर्ड्स बनाने हैं। आगे चल के पता चलेगा अभी आपको कि डैशबोर्ड भी रिपोर्ट पर ही बनते हैं। तो अगर डैशबोर्ड बनाना है तो स्टेप नंबर 1, एक स्टेप पीछे आओ, पहले रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट के ऊपर डैशबोर्ड बनाओ, ये होता है। तो ये ऐसा मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है ये। एडमिन के लिए ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट फेज होती है, हर चीज की रिपोर्टिंग करना, डैशबोर्डिंग, एनालिटिक्स क्या होता है। बिना रिपोर्टिंग के ना मैनेजर्स जो ऊपर के लेवल जो होते हैं ना, ऊपर के लेवल कोड नहीं देखते। जो मैनेजर्स लेवल के लोग होते हैं, टीएल लेवल के लोग होते हैं, ये सब आपका काम ऐसे नहीं देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। वो रिपोर्ट्स देखते हैं, डैशबोर्ड्स देखते हैं। वो कौन प्रोवाइड करेगा? एडमिन प्रोवाइड करेगा। ये इस टॉपिक को हल्के में मत लो, ठीक है। ये शायद आपको इंटरव्यू में उतने क्वेश्चंस नहीं देगा अभी, तो भी कुछ ही सीमित क्वेश्चंस हैं इसमें, मानता हूं मैं। लेकिन ना आगे चल के काम में जब आओगे ना, सबसे ज्यादा शायद इस पे काम करना। तो अच्छे से समझो इस चीज को। चलिए, तो ये था अपना पहला एग्जाम्पल। आपने ये देखा कि मैं एक रिपोर्ट पे क्या क्या कर सकता हूँ। अब कुछ और यूज केसेस हैं छोटी मोटी। अरे यूज केस 2 कहाँ चली गई यार? यूज केस 2 कहाँ चली गई? डिलीट मारा क्या यहाँ से? एक सेकेंड। कमाल। एक सेकेंड यार। हाँ, शायद मेरे हाथों से कुछ बीट हो गया है। जीरो 5। चलिए, सो नेक्स्ट है हमारी यूज केस की, जिसमें हमको टैबुलर रिपोर्ट, सारी टैबुलर रिपोर्ट ही करने वाले आ जाते हैं, ठीक है। सो टैबुलर रिपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है अपने को टू रिप्रेजेंट ओनली द हॉट रेटिंग कस्टमर्स, मतलब अकाउंट ऑब्जेक्ट पे टैबुलर रिपोर्ट। आई नीड टू कंस्ट्रक्ट अ टैबुलर रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ टैबुलर रिपोर्ट ऑन द अकाउंट ऑब्जेक्ट। मैं आज इसको अपडेट कर दूंगा डॉक्यूमेंट। सो वी नीड टू क्रिएट अ टैबुलर रिपोर्ट अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, जो कि रिप्रेजेंट करे सारे हॉट रेटिंग कस्टमर्स, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, सेव तो किया, वही एक बार सेव कर। Now let me create a new report। ठीक है, एक नई रिपोर्ट बनाता हूँ। once again it is account based on account, तो अकाउंट ही सिलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट इट। इसके बाद में कौन कौन से आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो अकाउंट नेम, टाइप, रेटिंग, लास्ट एक्टिविटी नहीं चाहिए, मॉडिफाइड बिलिंग स्टेट। आई वांट टू हैव ऑल हॉट रेटिंग कस्टमर्स, यहाँ पे सारे टाइप भी हटा देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन ब्रिंग द एनुअल रेवेन्यू, आई कैन ब्रिंग अकाउंट नेम, एनुअल रेवेन्यू, रेटिंग इज ऑलरेडी देयर। Industry, probably I want, industry, I want probably this billing city, I want country also, I want the phone, fax, and even the active status. Let me bring it up over here. So with this all, and select all accounts, range is all time accounts. तो अभी अगर मैं इस रिपोर्ट को रन करूं, तो यू सी आई कैन सी ऑल ऑफ द रेटिंग कस्टमर्स, मतलब सारे इनकी रेटिंग हॉट है, नहीं है, वार्म है, कोल्ड है, जो भी है सब दिख रहा है। लेकिन what we want a report where we can see only hot rating customer। तो अब मैं फिल्टर की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ पर एक फिल्टर लगा रहा हूँ। तो फिल्टर्स 3 तरह के होते हैं, फील्ड फिल्टर, क्रॉस फिल्टर, रो फिल्टर, ठीक है। बारी बारी एक एक सीखेंगे अपन। आज सबसे पहले मैं आपको सिर्फ फील्ड फिल्टर लगाना सिखाऊंगा, कल और कल इसके बाद फिर से टैबुलर पे काम करेंगे, क्रॉस फिल्टर, रो लिमिट फिल्टर पे जाएंगे। आज एक ही फिल्टर धीरे धीरे पढ़ेंगे, फील्ड फिल्टर।
अब फील्ड फिल्टर लगाने के लिए एक तो ये है कि आप चाहें तो यहाँ पर ओपन करके ये फील्ड फिल्टर सिलेक्ट करें। अगर आप डायरेक्टली ऐड बटन पे प्रेस करते हो तब भी फील्ड फिल्टर ही आता है, दोनों तरीके, ठीक है। या तो ऐड बटन पे प्रेस करो या फिर इसको ओपन करके फील्ड फिल्टर, दोनों सूरतों में आप फील्ड ही फिल्टर आते हो, ठीक है। तो फील्ड फिल्टर ही लगाना, तो फिर इतना घूम फिर के क्यों जाते। हाँ देखो, अगर आपको क्रॉस फिल्टर चाहिए या रो लिमिट चाहिए तब तो कंपलसरी आपको ये ऑप्शन ओपन करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपको फील्ड फिल्टर ही चाहिए, तो आप डायरेक्ट ऐड बटन प्रेस कर दो, दैट्स इट, आपको वही चीज मिलने वाली है ना। तो फिर घूम फिर के क्यों जाना, जितना हो सके कम नेविगेशन चाहिए हमको। यस, तो भाई हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर मुझे अब कुछ फिल्टर लगाने हैं। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले हो रहे हैं अकाउंट के जिनकी रेटिंग कुछ भी है, सारे हॉट, वार्म, कोल्ड, इवन, ब्लैंक। तो मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट दिस फिल्टर टू बी अप्लाइड ऑन रेटिंग। रेटिंग शुड इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये सब चीजें आप इसके पहले देख चुके हो, ये सारे इंटरफेसेस कहीं ना कहीं आपको पता है। रेटिंग शुड इक्वल्स टू व्हाट, पिक लिस्ट है। आई वांट ओनली दोज अकाउंट रिकॉर्ड हुज रेटिंग इज हॉट। Once you're done with this entire, once you're done with the entire field wheels and all, what, just press OK. Formula is going to be applied. देखिए formula लग गया, rating equals to hot. Now if you run this report, out of all that 17 data, you have only those 6 record whose rating is what, rating is hot. So this is how you apply field filter. This is how you apply field filter. That field filter could be applied to anything. अभी मैं इस पे और चाहूँ तो और आगे formalize कर सकता हूँ। I want to have this probably, those billing city, or rather the industry should equals to something. I could give any value. Probably I could give the biotechnical, etc. See, so अब यहाँ पे दो चीजें आ गई, एक तो रेटिंग जिसकी हॉट है, और एक और चीज उसकी इंडस्ट्री अगर बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऐसा एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास जिसकी रेटिंग हॉट है और इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरह से, अब इफ यू डोंट वांट इट यू कैन रिमूव इट आल्सो, ठीक है। यू डोंट वांट दिस फार्मूला, यू कैन इवन रिमूव दिस। तो ये चीजें होती है। दिस इज हाउ यू अप्लाई दी फील्ड फिल्टर। लेट मी से, so this is what, this is my this is my tabular. Why it is showing me like this? मैं इसको रन करके सेव, हाँ ये तो मैं चाहता था ना। tabular use case 2, this is what I want. Give the same description and we want to store it into the align HR report, ठीक है। यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं सेव। चलो आज इतना ही करते हैं, तो आप लोग भी इतने पे प्रैक्टिस करिए। कल मैं इसके आगे आपको और लेके जाता हूँ। कल भी टेबुलर से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा एक दो यूज केस और है, जिसमें इस यूज केस में आपको लगेगा क्रॉस फिल्टर, इस यूज केस में आपको लगेगा रो लिमिट फिल्टर, ठीक है। तो कल हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं, कल हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं और उसके बाद फिर हम समरी रिपोर्ट पे जाएंगे। आज इतना ही पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए, और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से इसको करिए, आगे बहुत काम में आएगा।